visible to all. So today is our second day of MS SQL Server. So right now I'm going to explain you the topic, that is we can say the editions of the MS SQL Server. There are different types. So there are one file I will share with you on email. ठीक है. So देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, same thing. So yesterday what did we learn? So we learn was advantages and disadvantages of the SQL Server, as well as the RDBMS, what is RDBMS, and as well as introduction of MS SQL Server. Same thing. Now I am going to today explain you a different topic. What is SQL Server? So basically yesterday we saw this topic, but there are some new concepts I will explain in this video. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, what is Excel, what is MS SQL Server. तो ये आपको पता है, SQL is a one type of tool and software, application software, and it is only used for to store or manage the data, retrieve the data, transact, processing the data, etc. So same thing here is I have explained what is SQL Server. SQL Server is a relational database management system developed by the Microsoft. It is used to store, manage, and retrieve the data structured ways using relational mode that organize data into table. आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी डेटा मेंटेन करते हो, रिकॉर्डेड करते हो, रिट्राइव करते हो, that all things goes through the table. What is table? A table, that means there will be some rows and column. It's called as a table. So same SQL, that is called as a structured query language. The full form of SQL is structured query language to manage and manipulate the data. Same thing. SQL Server provides a wide range of features. जैसे मैंने आपको बताया था कल कि इसके बहुत सारे फीचर्स है. मैनेज द डेटा, रिट्राइव द डेटा, ट्रांजैक्ट द प्रोसेस ऑफ द डेटा, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. SQL Server provide a wide range of the feature including supports of the transaction, stored procedures, trigger, and more. It is include tool the managing and monitoring the database such as SQL Server Management Studio. SQL Server supports various data types including numerical character and binary data, as well as large objects as a text, image, and XML data. It also provides a support team. मीन्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी आप कोई डेटा क्रिएट करते हो. इफ आई if I want to show the information related to employee, so employee related I just have to create the databases. I just have to create the data types. Like if I want to show the employee detail, then I will show the name of the employee, name of the city, name of the company, employee ID, employee salary, employee designation. These all are the fields we can consider it as the data types. So अभी मेरे को जैसे एम्प्लॉय नेम लेना है, तो मैं इसके लिए कौन सा डेटा टाइप लूंगा, वैर कैर. तो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट थोड़ा थरोली 2-3 दिन, हमको 2 से 4 दिन लगेंगे कम कंसेप्ट पता होने के लिए. तो सेम थिंग यहाँ पे था, एसक्यूएल के रिलेटेड जो भी प्रोवाइड होती है फीचर्स. वाई एसक्यूएल सर्वर यूज्ड, दिस इज आवर सेकंड डे. Why SQL Server? There are several reasons why users choose SQL Server. They are databases to management data system. So there is a one reason. It is a reliability and availability. What is the meaning of reliability and availability? That means it is a simple to understand and it will provide a different interchange connectivity. यानी आप SQL को कोई भी बैक कोडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते, चाहे जावा हो, चाहे आप डॉट नेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, या PHP के साथ, एक्सेट्रा. दैट्स व्हाई इट इज अ रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी.
The SQL Server is known as a reliability and availability features such as a clustering, mirroring, and always on the availability groups. These features ensure that database remains high available in minimum downtime. Next, इसका जो रीजन है वो है सिक्योरिटी. SQL Server provides the advanced security features to protect the data from unauthorized access. यानी आपके डेटा को एक्सेसिबिलिटी किसी को विदाउट परमिशन नहीं देगा जो कि आपका डेटा क्या होगा लॉस हो. एंड देयर विल बी अ एन्क्रिप्शन कंसेप्ट ऑडिटिंग रोल बेस्ड सिक्योरिटी. So this is the second reason why people is using SQL Server. Okay, same thing, scalability. SQL Server is a highly scalable and can handle large amount of data and high user load. It can easily scale up down to meet changing needs of the organization. Okay, so next, number 4, performance. SQL Server is optimized for performance with the features such as the query optimization, indexing, its memory table. It can deliver the fast response time even with a large amount of data. यानी परफॉर्मेंस कब कैलकुलेट होता है? मानो आपके पास लैक्स ऑफ कोड है बट एसक्यूएल उसको क्या करता है मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट करता है बिकॉज देर आर सम कंसेप्ट वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होने देता है वो डेटा को. इस वजह से वो वहाँ पर क्या है कम चांसेस है डेटा लोड होने के. इसलिए एसक्यूएल सर्वर को एक रीजन बताया गया इट इज अ हाई परफॉर्मेंस. ओके, I think so everyone is getting this point. If you have any question doubt you can ask by the chat box. Okay. Integration. SQL Server is integrated with well with other Microsoft technology. Like अभी just मैंने आपको बोला आप बैकएंड के साथ साथ बैकएंड जो है आप फ्रंट एंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. डॉट नेट, शेयरपॉइंट, पावर BI. These all are things integrated with SQL Server. So TSQL language. SQL Server uses TSQL language, which is powerful programming language that provide wide range of the features to manage and manipulate the data. Last point is a support. SQL Server is backed by the Microsoft Extensive Support Network, which includes online resources, forums, and the dedicated support teams. These ensure that user can get the help they need to resolve any issue quickly and effectively. So I think all of you getting the reason why people are using SQL Server and what is SQL Server. So all of you getting the differences and all of you getting this point. Okay, that's good. I hope everyone is getting this. सो सेम अभी देखिए हर प्रोग्राम की आइडेंटिटी होती है उसके सिंटैक्स के जरिए. मानो मैंने सपोज जावा का कोड लिख रहा हूँ और इसमें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटीज होती है सिंटैक्स होते हैं. तो सिंटैक्स इज वन टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो देयर आर सम एसक्यूएल सिंटैक्स, हाउ टू क्रिएट टेबल, how to create databases. So there are different types of syntax over here. Fine, same thing. The syntax of MS SQL Server is based on structured query language. कल मैंने आपको बताया था कि SQL Server में दो तरह के वेज है. आप क्वेरी फायर करके भी डेटा क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस एज वेल एज आप ग्राफिकली भी उसको शो कर सकते हो एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सिंटैक्स दिया है इट्स अ क्वेरी फॉर्म. So the syntax of MS SQL Server is based on the structured language with the some extension and variations specific to SQL Server. Here are some example SQL syntax SQL Server. Same thing if I want to create a database, suppose I want to create a database of the company. So then I will create a database and write the company name. Suppose I want to create a Entrata. Okay, so if I am create and execute this, so automatically database will create in the database. So same thing. Okay, are you getting this point? So I think this is the syntax and this one is the example. Create database and database name, suppose I am writing here. Okay, the same thing as well as
How to create a table? So there is a one syntax: create a table. What is your table name? You can suppose I want to create a table name login. CEO login, yeah, employee login. So I am giving name here. And then what is column? Column means serial number, ID, and password. So there are some data type. So basically this is the syntax. Just you have to understand how to write it. सो अभी क्या होता है हर प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की? और प्राइमरी की दैट मीन्स इट इज अ की. इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइड इन द होल टेबल. आपके पास 50 टेबल होंगे बट हर 50 टेबल के अपने अपने प्राइमरी कीज होंगे जो कि यूनिक होंगे, ना ही डुप्लीकेशन जनरेट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. टेबल कैसे बनाना है, डेटाबेसेस कैसे बनाना है, डेटा टाइप्स क्या होता है, इंसर्ट डेटा टेबल में किस तरह से करना है. हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. ये होने वाला है हमारा प्रैक्टिकली. अपडेट टेबल, डिलीट टेबल, है ना, जॉइन टेबल, रिट्राइव टेबल एक्सेट्रा. So this is our second day related the syntax, related the what is why the people use SQL Server, and what is the SQL Server. So hope so everyone is getting this topic. If you have any question query, you can ask by the chat box. I will respond to you. So have a good day, all of you. Thank you very much for watching this video. Have a good day, everyone. So now I am going to stop it.